What is gold leaf electroscope? This instrument is used to detect nature and measurement of charge. मतलब कि चार्ज है क्या, मेजर क्या है उसकी, और नेचर के. मेजर मीन्स हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज़, नेचर मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव. इट इज़ हैविंग gold leaf, metal rod, rubber stopper and metal disc. Okay, its one end is connected with gold leaf and other is connected with charge object, of which we want to know the nature and measurement. Now here we say the mouth of jar is fitted with rubber stopper through which the rod passes. Rod pass की इसमें से. The other end of the rod is attached to metal disc, means its one end is attached with metal disc and other is attached with gold strip. Some electroscopes have strips of silver, copper or brass instead of this gold leaf. Some electroscopes have strips of, means पतली पन्नी है ये, सिल्वर, कॉपर और ब्रास, गोल्ड की जगह. When you bring a charged body in contact metal disc of an electroscope, when we put near metal disc of any charged body and amount the dye will give you an idea of magnitude of the charge on the body you are testing. When you put near charged body near this metal disc, its divergence changes. Divergence changes means we show presence of charge, means divergence may be decrease or increase. Distance जो है decrease or increase होगी. However, now next, however the leaves will diverge when the body you are testing has a positive or negative charge. जो डाइवर्जेंस है इसकी, जैसा हमने दिखाया अभी, चेंज होगी. आई इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यू पुट नियर इट. टू डिटरमाइन नेचर ऑफ चार्ज यू हैव टू फर्स्ट चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप विद ए नॉन चार्ज. मीन्स जब हमने किसी चार्ज का पता करना है कि इस ऑब्जेक्ट में क्या चार्ज है जो इसके नज़दीक रखेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चार्ज विद नॉन चार्जेस. मीन्स पहले हमें इसको चार्ज करना पड़ेगा और हमें पता होगा कि जो चार्ज हमने इसको दिया है वो क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है. नाउ सपोज यू चार्ज इट विद पॉजिटिवली. मान लो हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया है, ठीक है, रॉड को. द लीव्स विल गेट पॉजिटिवली चार्ज एंड मूव अपार्ट. तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज को जब हमने इसको टच किए तो पॉजिटिव चार्ज से फ्लो बिकॉज इट मेटल डिस्क एंड दिस डाइवर्जेंस विल इंक्रीज, मूव अपार्ट. मतलब ये डिस्टेंस इनकी बढ़ जाएगी जो इनके बीच में है, इफ इट इज़ पॉजिटिव. ओके, द लीव्स विल गेट पॉजिटिवली चार्ज एंड मूव अपार्ट. देन टच द डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप विद द बॉडी यू वांट टू टेस्ट. First point, the distance between leaves may increase. This means that the body you are testing also positively charged. If this distance increase, then body is positively charged. And if the distance between leaves may decrease, which means that the body you are testing negatively charged. अगर डिस्टेंस कम होगी तो क्या होगा, बॉडी में नेगेटिव चार्ज होगा. इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस पॉइंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी चार्ज हैविंग नॉन चार्जेस, मतलब हमने इसको चार्ज के पॉजिटिव चार्ज दिया है. व्हेन वी कॉन्टैक्ट विद पॉजिटिव ग्लास रोड मीन्स डिस्टेंस इंक्रीज, ऑल्सो इंक्रीज. बट व्हेन वी पुट ए नेगेटिव चार्ज देन इट विल डिक्रीज. मीन्स सिंपल मेथड याद करने क्या है, मतलब कि पॉजिटिव इसके पास पहले से है और पॉजिटिव हम इसको और दे रहे हैं चार्ज, तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाए तो फैल जाएगा ये. मतलब पहले से पॉजिटिव है उसको और चार्ज फैल जाएगा वो. बट इफ़ वी गिव नेगेटिव चार्ज, इट इज ऑलरेडी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा. ये पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट था, ये नेगेटिवली है. नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, डिस्टेंस कम हो जाएगी. मीन्स जैसे हम इनमें से निकाल लिया कुछ तो इसमें कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाए, सिकुड़ जाएगा ये. और हम इसको दे रहे हैं तो क्या होगा, फैल जाएगा. ओके, इट इज़ इलेक्ट्रोस्कोप. Now flow of charge, here are some definitions. Means the simple definition, the conductor in which charge can flow easily. Okay, now and insulator charge can flow. Silver and copper as a conductor. Earthing means when charge body contact to, if we touch the charge body, because our body is a conductor, then charge pass our body
then go to earth, because we are on the earth. That is called earthing or grounding. Okay, next. Here see diagram. Plastic is an insulator. First see this diagram. So in the first case, that case, negative charge cannot move from one electroscope to other. Here it is negatively charged and it is a no charge, and it is an insulator. We connect this electroscope to this. Because it is an insulator, so charge can't flow to this. Now, electric wires are made of copper, aluminum or conductors. So in the second case, because it is connected with copper wire, इस केस में क्या होगा? The charge flow from this electroscope to this electroscope. But charge flow at which time? Because when they get equal charge, the charge flow will stop. जब इनमें इक्वल चार्ज होगा तो स्टॉप हो जाएगा. देखिए इसमें चार्ज फ्लो नहीं किया था. इट इज़ ए इंसुलेटर बट इट इज़ ए कंडक्टर. इसमें फ्लो होगा कब तक? जब दोनों में बैलेंस होगा, बराबर हो, तो इसे फ्लो होना क्या होगा? बंद हो जाएगा. ओके. और नेक्स्ट, स्पार्क्स एंड लाइटनिंग. हियर it is a styrofoam, it is a aluminium foil, this is a clip. First we charge the styrofoam by rubber, with wool, or rubbing the styrofoam plate with wool or paper, it becomes negatively charged. इसमें negative charge आ गया है इसमें, because it is insulator, so negatively charge move upper, don't get inside. Styrofoam is an insulator, negatively charged. Electrons cannot move easily inside it, ऊपर रहेंगे इसके. However, electrons can move from freely in a connector like aluminium. This is the aluminium foil. When the aluminium foil is placed on the styrofoam, electron flow from this to this. Okay, the electrons of the pan are repelled and they gather at the top of the pan. Means इसमें नेगेटिव चार्ज था इसके अपर साइड में, इन साइड में वो नहीं गया था. एंड व्हेन वी पुट एल्यूमिनियम फॉयल पेपर, दिस पेन इज, तो क्या इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो कर जाएंगे. कंडक्टर है ये, ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस? दे गैदर एट टॉप ऑफ द पेन. व्हेन यू ब्रिंग योर फिंगर नियर द टॉप, जब आप इसके नज़दीक फिंगर रखें, देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो चुके हैं. व्हेन यू पुट आवर फिंगर नियर दिस, नाउ व्हाट हैपन? On the way to ground, this flow of charge through air, gas, electric discharge. अब इसमें क्या होगा? मीन्स तो फ्लो ऑफ एयर चार्ज थ्रू एयर, गैस, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, तो इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा. वी डोंट टच, ओनली पुट नियर, देन ओनली डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रिक चार्ज. दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. स्पार्क्स एंड लाइटनिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. इसी टॉपिक बेस पे आपका लाइटनिंग है. मीन्स क्लाउड्स कंटेन मैनी क्रिस्टल ऑफ आइस एंड ड्रॉपलेट वाटर. अब बादल में जनरली क्या होगा? छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े होंगे और उनमें वाटर ड्रॉपलेट्स होगी, विच मूव अगेंस्ट ईच अदर. अभी उन मूवमेंट कंटिन्यू है. दिस कैन कॉज ह्यूज अमाउंट्स ऑफ चार्ज टू बी. जब ये ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और आइस, सम क्रिस्टल आइस, when they rub each other, then they are having charged. They can cause huge amounts of charge to build up in clouds. Clouds में charging आती है. Order nothing happen due to this charge builds up. मतलब कि normally small charges are present in the due to frictions. Because air does not conduct charges from clouds. Because air क्या है? bad conduct insulator है. उसमें से charge flow होकर हमारे तक नहीं आता वो. But when the accumulation of charge is great enough and wind brings the cloud close together, और जब quantity is more, which quantity? Charge quantity in clouds is more. The charge can jump from one cloud to another. Then charge jump करेगा one cloud to another through air. This electric discharge is lightning, that is called lightning. बिजली चमकती है जिससे. During this process, huge amount of energy is released in the form of light and water, light and sound. Okay. When the wind brings the clouds close to earth during a thunderstorm, accumulated charge sometimes jump from the clouds to ground. तो ग्राउंड में आता है चार्ज हो. The energy release can set buildings or trees on fire.
जिससे कि कई बार बिल्डिंग्स और ट्रीज को आग भी लग जाती है. नाउ लाइटनिंग कंडक्टर. लाइटनिंग कैन ओनली सिंपल इंस्ट्रूमेंट दैट वी यूज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग. जब बिजली चमकती है उसको बचाने के काम आता है आपका ये लाइटनिंग कंडक्टर. और बिल्डिंग्स वगैरह आप यूज होते देखिए, जो स्मॉल सा एग्जांपल है डायग्राम में. इट इज लाइटनिंग कंडक्टर. व्हेन चार्ज फ्रॉम क्लाउड्स fall on this, it will get easily by this rod and go to earthing. Okay, now some lines are here. Lightning conductor is a tall metal rod which is fixed to building to protect them from being damaged by lightning. Means उनको बचाने का काम आता है. The top of rod ends in spikes, like spikes here also spikes, which is the lower end of the rod is connected to metal plate. जो इसका lower end है प्लेट का, that is buried underground. If the lightning happens to strike a building which has a lightning conductor, means when light fall on us, charge fall on us, the charge passes harmlessly through the metal rod into the earth. So without harm, charge flow to ground as or gets earth. Means उसकी अर्थिंग हो जाती है, that we protect us. Okay, thanks. Have a nice day. Now this chapter is over. And in the next lecture, we will solve this chapter. Thanks. Have a nice day.